Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another one of my videos. So this is basically a continuation of the last video that we did, and उस वीडियो में specifically हमने Google queries के ऊपर बात की और react किया. इसको हम सिलसिले को जारी रखते हैं. And in this video, we will be continuing from where we left in the last video. Some more Google queries about doctors and medical life. So the first one is, how do doctors test for diabetes? It's very simple. It's by doing blood tests. एक रूटीन के अंदर आपको क्लिनिक जाना पड़ता है और 2 घंटे के अंदर वो आपका 30 मिनट्स के इंटरवल के साथ आपके ब्लड शुगर्स को चेक करते हैं और उस पर बताया जाता है कि whether you've got diabetes or pre-diabetes. और एक और तरीका है कि sometimes सिंगल टेस्ट HbA1c जिसे कहा जाता है उसके ज़रिए भी किया जा सकता है. How do doctors test for ADHD? So ADHD is attention deficit hyperkinetic disorder. And the idea is basically कि कुछ बच्चे शुरू से शैतान और मसरूफ़ होते हैं. So इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे फ़िज़िकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन. लेकिन ADHD बेसिकली एक स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस है जो कि यूज़ की जाती है न्यूरोलॉजी के अंदर कुछ उस तरह के बच्चों के लिए. So इसको क्लिनिकली अमूमन डायग्नोज किया जाता है. आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि यूजुअली इसे क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है. इसका ये मतलब है कि जो हिस्ट्री पेरेंट्स बच्चे की देते हैं और जो उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस और उसके सोशल लाइफ के इंटरेक्शंस हैं उसको देखकर इसको यूजुअली डायग्नोज किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू डॉक्टर्स चेक फॉर ब्लड क्लॉट्स इन लेग्स? सो अगर किसी के क्लॉट्स हों, आप इसको यूजुअली डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं और इसको टेस्ट करने के लिए यूजुअली अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है. हाउ डू डॉक्टर्स टेस्ट फॉर कैंसर? तो कैंसर को टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी होते हैं और स्कैन्स भी किए जाते हैं. ब्लड टेस्ट कुछ स्पेसिफिक कैंसर के लिए डेवलप किए गए हैं. आई विश कोई ऐसा टेस्ट हो कि वो सिंपली आपको हर कैंसर के बारे में बता सके, बट दैट्स द ड्रीम एक्चुअली. और उसके अलावा स्कैन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन जिस ऑर्गन का कैंसर आपको सस्पेक्टेड है उस ऑर्गन का आप स्कैन करेंगे. हाउ डू डॉक्टर्स टेस्ट फॉर MS? सो MS इज़ यूज फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये एक बीमारी है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अपने ही वाइट सेल्स आपके ब्रेन के सेल्स को अटैक करते हैं और उसके साथ पेशेंट्स को वीकनेस होने लग जाती है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों की, और ये प्रोग्रेसिव होती है और ये एक सर्टन इंटरवल के बाद बढ़ती चली जाती है. सो इसको MS कहा जाता है और इसको डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट भी हैं, बट मोर स्पेसिफिकली इसको MRI के ऊपर डायग्नोज किया जाता है. अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन दीज आर सम बेसिक जनरल थिंग्स दैट वी नो अबाउट दिस डिजीज़. हाउ डू डॉक्टर्स डायग्नोज डिप्रेशन? सो डिप्रेशन इज़ अगेन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, और जब हम क्लिनिकल कहते हैं वी मीन्स यूजुअली बाय हिस्ट्री टेकिंग, और इस केस में यूजुअली देयर वोंट बी एनी साइंस, सो इट्स मोस्टली बाय हिस्ट्री कि आप पेशेंट से पूछें और उनकी लाइफ की स्टोरी को आप समझें, देन यू विल अंडरस्टैंड इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और नॉट. Where do doctors get paid the most? It's a tricky one actually, and it all depends on which stage of your career you are and how much experience you have and all of those things. It can vary. But usually what I have heard is usually it's more in America or places like Qatar where there is a lot of money while you do your standard medical job. Where do doctors work? It's a very good question. In hospital, usually. Where do doctors take blood from? So usually blood is taken from veins, and the most common veins which we use are the ones in the hands and in the arms as well. लेकिन अगर access ना मिल रहा हो तो then sometimes we end up taking blood from veins in the legs. उससे भी ना मिल रहा हो तो बिग वेन्स को यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, नेक वेन्स. और अगर उससे भी ना मिल रहा हो तो हम इंट्राऑसियस जिसे बोन के अंदर जाके हड्डी के अंदर से भी हम सैंपल ले सकते हैं. वेयर डू डॉक्टर्स लिव इन लंडन? इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. आई बिलीव समवन मस्ट हैव बीन स्पेसिफिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट one or two certain doctors. But I can't answer that because there are a lot of places that you can live in London. Where do doctors
hit your knee. So हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में पटेलर टेंडन या पटेला कहते हैं, और मोर स्पेसिफिकली जस्ट बिलो द पटेला वो एरिया होता है जहाँ पर हम हिट करते हैं, और उसका मकसद यूजुअली ये होता है कि आप रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे होते हैं. इसका ये मतलब है कि अगर नी जर्क शो करती है तो दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सेस आर इंटैक्ट, and that's a healthy thing, that's a normal thing. So that's what you're trying to assert in there. Where do doctors hang out? So I have always wanted to find that out myself, so please let me know if you know. Where do doctors send blood tests? So it's usually sent to a laboratory, जहाँ पर उसको प्रोसेस किया जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ प्रोसेस आपने और किस टाइप का सैम्पल आपने प्रोसेस करवाना है, आप बायोकेमिस्ट्री या हेमेटोलॉजी लैब आप भेज सकते हैं. So in this prompt, I used some doctors as the starting bit of the sentence, and let's see what did we end up with. Some doctors are fools. That is true, actually. That is so true. You can't dispute that. Some doctors' name, well, you can take my name for example. Some doctors are lawyers. Okay, so that is actually a case. I have had a friend who was a lawyer as well. Some doctors are professors. Yes, they are. And the professorship usually is linked with the number of publications that they have done, plus obviously the teachings that they do in a teaching hospital. Some doctors, crossword clue. Okay, so probably this is a crossword clue that they are looking for. Some doctors are fools. Joshi is a doctor. Right, so again it seems very specific. मेरे ख्याल में जोशी भाई के साथ इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है जो निकालना चाह रहे हैं. But again, a very specific prompt. Some doctors think that you should. So यहाँ पे रुक गए ये. So you should probably do something. Okay, let's see the next set of these prompts. When doctors get it wrong. So it really hurts, to be honest. So when you get it wrong, and यहाँ पे मैं specifically बात कर रहा हूँ when we are doing diagnostic work, it goes without saying that we do try our best to limit the mistakes and basically not to commit them in the first place. But you can't help because doctors are humans as well. But there are processes in place in hospitals, and especially good hospitals, जहाँ पर आप इसको minimize करते हैं कि the chances of someone's life being lost because of us getting it wrong, it is negligible basically. Next one is when doctors become patients. This is again very interesting. I have had experience of being patient multiple times in the hospital that I've worked at. One such example is when I got COVID and I got admitted. So that was the time when आपको आपको पता चलता है कि how does a patient feel. Or I do remember coming through the emergency and staying and waiting actually essentially in the ED for almost more than an hour just to be seen by someone, my colleague essentially. But I did not make a hue and cry out of that, which is fine because all of the patients go through the same experience, unfortunately. But I do remember that it really hurts to be being in a situation which is being sick essentially or ill, and then waiting for hours to be seen in the emergency. But unfortunately, obviously, there is a lot of workload on NHS in this country, and obviously the other healthcare systems in the other countries as well. So ideally, we obviously should be seen immediately at the moment we go, but that's not the case. So I do remember that time, and I do remember being seen by my colleagues for the first time as a patient. और वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कि जब आप जाते हैं और उसके बाद आपका अपना कोलीग जो आपके साथ काम करता रहा है, समटाइम्स आपके जूनियर्स, वो आते हैं, वो आपके डॉक्टर्स और फिजिशियंस बन जाते हैं, एंड दे आर टेकिंग द हिस्ट्री, एंड यू हैव टू एक्ट, और इनफैक्ट इट्स नॉट एक्टिंग probably क्योंकि आप obviously you are unwell at that time, but you have to understand the whole situation and the fact that you are actually being treated as a patient. You just have to let down your guard and just act like a normal patient. It is difficult though, I'll tell you that. It's not easy because I do remember जब मैं COVID के साथ admit हुआ, so I still
remember that I wanted to see my own chest x-ray and decide whether I need to stay in the hospital, which was not allowed, and I didn't do that either. But I do remember that I wanted to know what was going on. I think the fact of knowing something is certainly not a bad idea at all, and it's the right of any patient actually, or every patient, to know what's going on with their bodies. One doctor's back on BBC. So I think again this it seems like a specific incident that they are talking about. I have no idea, to be honest. If you know which incident that they are talking about, please leave a comment down below. And when doctors don't believe you. Okay, so again, I think this is a very realistic prompt, and this is again something which we face a lot by the patients. Patients हमेशा हमसे ये शिकायत लगाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी बात का एतबार नहीं कर रहे. So again, it's a bit unfair in a way, क्योंकि we would have seen hundreds of patients with that same complaint. तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आपकी बात सुन नहीं रहे होते या एतबार नहीं कर रहे होते, लेकिन इसका ये ज़रूर होता है, हमारे जहन में चल रही होती है बात, कि हमने उसी तरह की प्रेजेंटेशन के साथ सैकड़ों मरीज़ देखे हुए होते हैं, और हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट अपने माइंड में साथ साथ कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ रियलिस्टिकली डेंजरस है और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसको हम ऑब्वियसली बिनाइन या लेस डेंजरस समझते हैं. ऑलराइट, so a lot of talking for today. Thank you so much for joining me today. I will see you again with a similar video. If you like this format, and if you want to know more about what doctors do and don't, and especially in our own practice, what do we face, and especially with regards to the patient life side of things as well, please leave a comment down below and I'll make more of these videos. Thank you so much for joining me today. I shall see you in another one of these videos. Until then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.